Mahayogi Vinodanand. It's Friday and it's 3:45 in the morning. So Amrit Brahma Muhurt hai. It's the best time for meditation. It's the time when you have your Sushmana. I'll tell you, it's चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना जो ज्ञान की नाड़ी है, सो इस समय चलती है और इस समय योगाभ्यास और चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन के लिए इज द बेस्ट पीरियड, 1 or 2 hours. So I had an intuition to give some secrets of yoga, Yog Kriyas and Swar Vigyan to the persons who are striving for spiritualism. First thing, आज मैं आपको अश्विनी मुद्रा के बारे में बताऊंगा. मैंने आपसे बताया था कि मैं slowly I'll be taking you to the extremes, Vajrauli Kriya also. In the meantime, I am giving instructions and the practice of Khechari Kriya also. See, Ashwini means घोड़े को हिंदी में घोड़ा कहते हैं, उससे लिया गया है इसको अश्विनी क्रिया. घोड़ा क्या करता है? आफ्टर डिस्चार्जिंग इट्स एक्सक्रीटा, ये अपना जो मल द्वार है, जो रेक्टम है, आफ्टर डिस्चार्जिंग इट्स एक्सक्रीटा, ये क्या करता है? इसको अपने एनल को, अपने एनस को, मल द्वार को बहुत जोर से खींचता है अंदर को. दिस इज कंट्रैक्शन, pulls inside, then releases. Contractions, pull, release, contract, pull. He does it 15 to 20 times after releasing the excreta. यानी कि वो अपना लीद करने के बाद घोड़ा अपने मल द्वार को बहुत ही ताकत से, शक्ति से खींचता है और छोड़ता है. Contraction and releasing. और इसमें कभी कभी आप अगर देखें ध्यान से तो उसमें फर फर की आवाज भी आ जाती है. वो हवा को भी खींचने में सक्षम है, हवा खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना. तो ये अश्विनी क्रिया कहलाती है. तो योगाभ्यास में हमें भी आफ्टर रिलीजिंग मल द्वार, अपना मल त्याग करने के बाद बैठे बैठे, टॉयलेट सीट में ही बैठे बैठे, हमने अपने मल द्वार को विगोरसली खींचना और छोड़ना है. खींचना और छोड़ना है. यह मूल बंध का भी एक प्रकार का रूप है. और इससे विशेषकर जो लोग बवासीर से, जो पाइल्स की बीमारी से परेशान रहते हैं, उन्हें तो ये रामबाण है उससे क्योर होने के लिए. तो जब आप मल द्वार, जब आप अपना मल त्याग करने के बाद बैठे रहिए, उसको एटलीस्ट 20-25 बार खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें. तो ये आपको बवासीर की बीमारी से और भी जितने भी रोग हैं, फॉर एग्जाम्पल इन यंग people, what happens, they suffer from nightfall and all other sexual diseases. So उनके लिए भी यह रामबाण है. उन्हें बहुत परफेक्ट कंट्रोल आता है इस क्रिया को करने से. मूल बंध का भी इसमें हमें हेल्प मिलता है. तो ये अश्विनी मुद्रा का आपने अभ्यास करना है. अपने अश्व, घोड़ा, जिससे हॉर्स पावर वर्ड भी लिया गया है, वो बहुत पावरफुल है, तो वो बहुत कम बैठता है. घोड़ा अपने जीवन में खड़ा ही रहता है. इसमें वेरी रेयर केस द हॉर्स सिट्स. तो इस अश्विनी क्रिया का अभ्यास आपने करना है. और इसका आपको आगे चल के जब आप वज्रौली क्रिया करेंगे या उद्यान बंध लगाएंगे, उससे आपका इसका मूल बंध लगाने में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आपका सेक्सुअल इंडल्जमेंट में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल आएगा. नो, आई विल गिव यू अ सीक्रेट हियर. आपका ये स्वर विज्ञान से संबंधित है. बिकॉज आई हैड एन इंट्यूशन टू पास दिस मैसेज.
हमने क्या करना है, ये सृष्टि है अपना, एवरीबडी नोज इट, विद सीमेन एंड द ओवम, इनके मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इस ब्रह्म मुहूर्त में, दिस इज द टाइम आफ्टर 3 to यू कैन से 5:30, आपका सुषुम्ना नाड़ी चलता है। इसका आपको पता कैसे लगेगा, आप दोनों नॉस्ट्रिल से आपको बहुत अच्छे से श्वास आएगा, बहुत अच्छे से आपको थॉट्स अच्छे आने अपने आप आते हैं, यू नो, ऑल आई मीन वेरी स्पिरिचुअल थॉट्स विल क्रीप इनटू योर माइंड, यू नो। सो इस समय आपने सिर्फ भक्ति करनी है। इन एनी केस you have not to indulge in intercourse, especially the couple, the married. In case if the female sustains pregnancy, तो जो हमारा issue होगा, he will be definitely mentally, you can say, retarded, or physically, you can say handicapped, you can say anything, mentally or physically handicapped. So it's very very important, you have never to indulge in intercourse. अमृत इस समय सुबह जो मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त बताया, इसमें क्या है, सिर्फ भगवान का ध्यान किया जाता है। इस माया स्वर जो है, मायावी स्वर माया, स्त्री स्वर है, इसमें चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ये सारी माया जब ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो इससे कोई संबंध, कोई भी हमारा मायावी कार्य नहीं बनता। एनदर थिंग, स्वर विज्ञान का आपको और बताऊंगा, जब कभी दिन में भी कई बार होता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल जाती है, उस समय आपका कोई भी वर्ल्डली काम सक्सेस नहीं होगा। तो आपने व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to experiment with all these things. So secondly, what you have to do, if we need a male child, say if you need a male child, you have to experiment all these things, because ये स्वर विज्ञान बहुत ऋषि मुनियों द्वारा इनके प्रयोग किए गए हैं, तो ये 100% ट्रूथ है। So what you have to do, the couple, those who need male child, so you have to be very careful about your स्वर विज्ञान। यदि आपका इंटरकोर्स में डल्ज होते समय बायां स्वर आपके फीमेल का, आपके कपल में स्त्री का चल रहा है, आपकी वाइफ का चल रहा है, और दायां स्वर आपका चल रहा है, तो उस समय इफ शी सस्टेन्स प्रेगनेंसी, the child will be definitely a male child and will be, gallant, brave and robust in health. Again, I'll tell you, I'll repeat, it's very important. During your mating, अगर आपकी मिसेस का, आप कपल में आपका बायां स्वर आपकी मिसेस का चलता है और आपका दायां चल रहा है मेल का, तो उस समय if your wife, if your partner sustains pregnancy, तो डेफिनेटली ही वो मेल चाइल्ड होएगा, एंड बहुत ही he'll be gallant, brave, very very healthy. And if you need a female child, this has to be opposite. The male, अगर उनका राइट स्वर चल रहा है, आपने देखना है, इसको पता लग जाएगा, जो इजीली इसमें से सांस आएगा, दूसरे में से कम आएगा। अगर मेल का राइट चल रहा है और फीमेल का, मेल का लेफ्ट चल रहा है, मैंने आपको बताया अगर लड़की के लिए हमें फीमेल चाइल्ड चाहिए तो मेल का लेफ्ट स्वर चलना चाहिए और फीमेल का राइट स्वर चलना चाहिए। पहली क्रिया से उल्टा मैंने आपको बताया है। फीमेल के लिए मेल का जो है लेफ्ट स्वर चलना चाहिए और फीमेल का राइट स्वर चलेगा। उस समय अगर आप मीटिंग करते हैं, उस समय मीटिंग करने से जो इशू होगा, जो आपका चाइल्ड होगा, वो डेफिनेटली विल बी फीमेल, लड़की होगा। सो these experiments are, they never fail. It happens, what I have said you, according to the books also, and then you have to make experiments now. आपने क्या करना है इस दुनिया में स्वर विज्ञान के प्रयोग के लिए? ये तो मैंने आपको मेल फीमेल चाइल्ड के लिए इसका रहस्य बताया। अब इसका आपने एक्सपेरिमेंट करना है जीवन में कि इनमें ट्रूथ कितना है।
So what you can do is, in your life, whenever you go anywhere, for some job, for some interview, जो उसको दुनियावी काम कहते हैं, संसारिक काम करते हैं, तो ये आपका बायां जो स्वर है, चंद्र स्वर है, इसमें दुनिया के सारे काम बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you have to go for an interview, to appear in some exam or anything worldly, you want to succeed. अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो आपका काम बनेगा. It's 99.5. तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल, you are going for an interview. During your, or for example, you are going to meet somebody, Just see, when you go over there, अगर आपका दायां स्वर चल रहा है, बायां नहीं चल रहा, तो chances are very dim to meet that person. And you can experiment this. And secondly, when you have to indulge in some discussion or you want to suppress somebody, so then कोई वीरता का काम आपने करना है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स फाइटिंग और समथिंग. सो ये आपका राइट स्वर यदि उसमें चलेगा तो यू विल बी इन ए डोमिनेटिंग मोड. यू विल बी एबल टू वेरी इजीली डोमिनेट द पर्सन. सो ये दो स्वर मैंने आपको बताए, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, और सुषुम्ना का मैंने आपको बता दिया पहले ही. एंड नेवर टू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है. जैसे अभी, फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू, अभी ये ब्रह्म मुहूर्त है. आई टोल्ड यू एट एन इंट्यूशन टू पास these thanks instructions to the humanity. So now see what happens now with this. It's very easily. ये both the swars, ये दोनों चल रहे हैं अभी मेरे. ऐसा नहीं कि इसमें से कम आ रहा है. They are equally flowing. I am very comfortably. Otherwise क्या होता है, कभी दिन में आपका most of the time दिन में ये बायां चलता है. And when you take your lunch or dinner, तो उसके बाद ये राइट चलना शुरू हो जाता है. इससे हीट पैदा होती है बॉडी में. दिस इज कॉल्ड सूर्य स्वर. सो नाउ इट्स अ ग्रेट साइंस, दिस इज अ साइंस. इफ यू go deeply into it, not blindly, first you have to make experiments. Experiment means, I told you, when your left nostril is flowing, you are going for interview or meet somebody, see what happens exactly. If you're, by the way, if your Sushmana Nadi flowing, and you go for some job or materialistic purpose, you want to meet somebody, you will find that you won't be able to succeed in that particular mission if Sushmana Nadi yadi chal rahi hai. So you keep experimenting these things. These are worldly things, but everything is scientific in this world. So Ashwini Kriya, I told you, it's very important. You have to practice it, and wherever you are sitting or standing, you have to keep on practicing this thing. Your rectum, your anus, you contract this, leave this. Now another secret I am going to tell you. ये थोड़ी मर्यादा का विषय है. So यदि आप लोग कहीं इकट्ठे फैमिली में बैठे हैं, because I am a yogi, it's a science, but sometimes we have to discuss it. Like you can say medical terms. Young generation के लिए भी ये बहुत बड़े टिप्स हैं. लेकिन अगर आप लोग फैमिली में बैठे इकट्ठे देख रहे हैं, योर चिल्ड्रन, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो इनको थोड़ा अलग अलग देखिए. सो मैं आई विल बी रिसाइटिंग द मंत्र ऑफ ओम. यदि आप फैमिली में इकट्ठे बैठे हैं तो काइंडली आप थोड़ा इसको अलग अलग देख लीजिएगा. आई विल बी स्पीकिंग इन अ वेरी I won't speak so openly, but still, So see what happens. मैं ओम का जाप करूँगा. अगर कोई बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठे देख रहे हैं, ऐसी awkward situation ना आपको फील हो, so I'll be doing the ओम जाप, and आप इसको separately देखिएगा. After the ओम, I am going to give you a very good secret to make your life happy, prosperous, because this part of mating and sex is it's a basic part, and we must be perfect. So I'll now recite the Om. In the meantime, you can separate yourself from your parents and child, see it differently. Okay. Om.
ओम श्री गुरुवे नमः। देवतायाः दर्शन च करुणावर्णालयं सर्वसिद्धि प्रदातारं श्री गुरुं प्रणभाम्यहं वराभयकरं नित्यं श्वेतपदं न्यासनं महाभय निहंतारं गुरुदेवं नभ्याम्यहम्। Om. So now I am going to give you a secret. You have to practice it. Some other day I told you, I'm a soldier. I happen to be a soldier. So I'm a man of my words, and I've got no selfish motives except the welfare of humanity. So the purpose, what I'm going to tell you is, you have to practice this Ashwini Mudra. ये मूल बंद भी आपका लगेगा. Now, first of all, you are supposed to have robust of health. I have given you some secrets of Swarv Vigyan. So now when the male and female, the couple, and this message is for youth also. Now I have separated you from your, if you are listening to me, very carefully listen to me. Whenever you indulge in sexual activity, what you have to do is, the genital organ of male, okay, so when you, at the time of ejaculation, what exactly happens, everybody knows. What happens, our genital organ of the male, it swells and shrinks, swells and shrinks at the time of ejaculation. All of you are familiar with this. It happens, your genital organ, when it's inside, penetrated in the vaginal passage, okay, right up to the mouth of uterus it reaches. So what happens during your ejaculation, orgasm you can say, what happens, your genital organ, it swells and contracts, swells, expands, and at least for 20 times, 15 to 20. So now what you have to do, you achieve a control by these kriyas. First thing, Ashwini Mudra, Moolband. And at that time, when at the time of ejaculation, your organ swells and shrinks, the female gets the immense pleasure at that time. So the same thing, you have to, not on at the time of ejaculation, it will happen automatically. But even before that, many times, controlling your ejaculation, what you have to do, you have to practice this Ashwini Mudra. When your organ is inside. So if you will practice Ashwini Mudra, your genital organ will expand and shrink, extend at your will. At your will. You have to keep on doing it time and again. So this will give the same action to your organ, swelling, contraction, swelling, expansion, contraction. This will take your partner to the extreme pleasure. In the same way, the female too, they have to practice this whom, whom, whom. See, when you say whom, whom, so what happens? The contraction automatically happens in your anal passage and your rectum and your then this your organ also. So in mana also, while you are indulging and as sexual activity in your mana, you do it like this or do Ashwini Mudra, female too. So both of you, both of the male and female, during the kriya, if you practice this thing, so the first thing is, you can prolong the time of your sexual intercourse even up to hours at a stretch, because the ejaculation will come under control. And secondly, this is your physical, I am telling you. So what happens, for example, I'll tell you, be very careful, listen to me. Now this, closing your fingers like this, opening your hand, closing, it's in your power, you know. These controls are in your power. But the ejaculation, when you reach the climax, you lose the control. You don't have any control and the wall opens and you lose the, but what you have to do with this japa of whom, with Ashwini Mudra and Moolband, you will slowly control this process of ejaculation. And the immense pleasure
You will not lose your health. Now, this is for the married. Now I talk to the young. They are like my children now. After the age of 15, after when you reach an adolescent period, it's a time, you know. So everybody's experienced those things. They suffer. Sometimes many people meet me. You are like my children, I am telling you, those who have reached the age of 15 or 14, because everybody passes through these stages. So now what happens, most of the boys, our young generation, what they do is, they are not aware of all these things because we have lost our values. I am telling you, we are losing. In yoga, in meditation, in japa, we have got so many secrets here to build up to remain healthy mentally and physically. Now what happens, even the young boys, they suffer from eyesight disease, some sugar, the weakness, physical, mental, they are so weak, see. So what the reason is, they start masturbating, masturbation. Then, because they are not aware of all these things, how to have control on this. The other reason is crime also. So for the young, see, keep following me, along with asanas, shishasanas, you have to practice the same thing which I have explained to you earlier. Ashwini Kriya, this will give you immense control on your sexual activities. So by the time, so because for your studies also, दिमाग में ओजस तेजस जो शक्तियां बनती हैं. नाउ पीपल कीप आस्किंग मी, सर रिटेंशन पावर कैसे बढ़ना है, मेमोरी का पावर कैसे बढ़ना है, उस बीमारी का इलाज कैसे है, इसका सी इन योगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. यू हैव टू प्रिजर्व योर ब्रह्म तत्व. दिस इज, मैंने बताया, इकोसिस्टम. जो हम खाना खाते हैं, लास्ट में जो हमारा सीमन है, ये ऊपर जाकर बिंद कहते हैं, महाबिंद बनता है. यहीं से ओजस तेजस, जो रिटेंशन पावर आती हैं, रीजनिंग पावर, लॉजिकल पावर्स. सो एवरीथिंग, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, so you can utilize it anywhere. So even attention power, you will never feel sick, you remain young. See, I am example before you. I am giving you all the training for this yoga and sex. I never indulge in all these things, because I know it, I have experienced it, I have passed through all those stages. Now I remain in my asana. See, now even at 3 I got up, thinking all the time about the Almighty, what has to be done. Now I want to share being a human being, because especially for the young generation, I am telling you, it happens, it does happen. And now, see, in this world, you have to be very, very cautious, beware of never going for, see, homosex, I don't know what, अभी तो एड्स HIV का ही एक हमारे सामने डिजीज नहीं उभर के आई. आने वाले समय में इस पोल्यूशन में जो हमारे मॉरल वैल्यूज खत्म हो रही हैं, ना जाने कौन कौन सी डिजीज आएंगी. विल फॉल विक्टिम टू अननोन डिजीजेस, क्या क्या आ जाएंगी अभी. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिजर्व दिस एनर्जी. ब्रह्मचारी नहीं बनना है तो एटलीस्ट यू आर सपोज टू हैव फुल कंट्रोल ऑन दीज थिंग्स. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस योगा, pranayama, you can become anything in life. Your attention power, your reasoning power, the only thing you have to preserve it, and there's a way for that. Mere thinking won't help, because अपना जो मन है, again I am repeating this, जो हमारा मन है, जो थॉट्स हमारे चलते हैं, और जो हमारा जो ब्रह्म तत्व है, सीमन है, और हमारा प्राण है, जो आप प्राणायाम सुनते रहते हैं रोज टीवी चैनल्स में, योगा में, वो जो प्राण शक्ति है, नॉट द ब्रेथ, हमारे प्राण, हमारा मन और हमारा सीमन, ये तीनों के तीनों, these three are the beads of the same rosary. Suppose you have a rosary with 3 beads, it's woven on the same string. So if you start controlling your semen with the help of yoga, with the help of the thinking, spiritual thoughts, with good, go and strive for the best, go in for literature. See, so the moment you start achieving control, so later on I'll keep talking to you, because it's a subject which, because I can't go so open, but still,
I'll try my best. So for these things, I'll be giving you some asanas. थोड़े आसन कीजिए. शीर्षासन is the best. It's known as the asanon का राजा है. This will give you brahmacharya, ojas, tejas, everything. Disease-free body होएगा. If you want to become a sports person, what you have to do is जठराग्नि पैदा होना है आपका जो पेट में. आजकल मैं देखता हूँ the young generation, I feel so sorry for them, So select a future army. The best thing, keep watching my movies, So what you have to do is try to preserve this energy. This is the only fuel. This atomic energy, nuclear power. It's a secret to the success, the young generation. Be choosy. So I'll keep giving you the secrets, and especially the young generation, because I have also passed through these stages, I passed through all these stages. Generally, people fall victim, young generation, after the period of 14 or 15 years, after when you're 9th or 10th class. This happens, These are natural things. So you'll fall victim to your masturbation, then your, homosex and all whatnot, So the only thing is, your thoughts are controlled if you achieve control on your semen. This is possible. Nutritious and regulated diet. A good literature. Go through Gita, Hatha Yoga Pradipika. Keep on reading. Give some time to these books also. Because we are descendants of yogis. We are descendants of, Rishi Munis. Ours is a country. We are lucky enough, So my purpose, replication. You have seen that. Newton's laws. Every action has got equal and opposite reaction, In our life too, same thing is happening here. So whatever you do, you'll get an equally opposite reaction to that. So there are ways of life. You have to be very, very analytical about yourself. Be self-introspective. And be with me. Keep watching my videos. So in life, the only way to success is the perfection on your body and mind, intellect. Vivek hona chahiye. So I had an intuition to pass this message about Swar Vigyan, and especially young people. I'll keep giving some instruction on my videos in a very subtle way. So yes, I assure you, if you start doing these Shishasanas, some yoga practices like I gave you this Ashwini Mudra today, you'll become as strong as horse. Remember it. I am the living example before you. I am not exaggerating my statement. I tell you, I am 63. I feel like running now. I have taken my sleep just for 4 hours hardly. Now I got up. I feel like running now, running. Just keep talking to people. I'm so energetic, That's what, you are like exuberant. You must be enthusiastic, exuberant, full of energy, full of power, going for the best. Bhagavan Krishna, just see how he used to live with so many gopis and all, Even while remaining with them, he was the master. He knew all these things, So going for that, so I enjoy. मैं क्यों करता हूँ? Because God reciprocates. मैं आपको ज़्यादा messages देता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, YouTube में डालता हूँ. Thanks a lot to the YouTube. God reciprocates with me. मेरे आसन सिद्ध होते हैं. The more you practice yoga, तो मुझे उसका effect आता है. See, it's a law. It's Newton's third law. It's my action. This social service of mine, मेरे आसन सिद्ध होने लग जाते हैं. I find myself more and more energetic. So in the next video, I'll be giving you more instructions. Be very, very healthy and try to strive for the best. Be with me. Keep following me step by step. Shishasana, Padmasana and Pranayam. So enjoy yourself and try to get up early morning. Amrit Vele mein uthiye. In my next videos, I'll be giving you some clues to how to get out of the marsh of addiction, de-addiction. I am from Punjab.
So the only way to come out of so I'll be giving you instructions in the next videos. Keep following me. Be healthy. Have robust of health. Cat stretch, exercise, running. Go in for that. So that's all for the day. Deep breathing. All the best. Oh.